गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर that is related to right to certain freedom under article 90. तो आर्टिकल 19 कवर करता है राइट टू फ्रीडम। अब हम जब यहाँ पे देखेंगे फ्रीडम का राइट जो है वो किन किन चीजों से रिलेटेड है, किन किन चीजों की हमें फ्रीडम है। ओके, तो राइट टू फ्रीडम इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the Constitution of India. The six fundamental rights enshrined in the Constitution are considered essential for the functioning of Indian democracy. The right to retain freedom of the Article 19 refers to first, freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of association and union, freedom of movement, freedom of residence, freedom to trade and occupation. Okay. Now we will discuss all these type of freedom one by one. सबसे पहले हमने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसा आपको नाम से लग रहा होगा, किस चीज की फ्रीडम है यहाँ पर? हमें बोलने की आजादी, हमें हमारे व्यूज, हमारी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की आजादी। तो आर्टिकल 19 guarantees to all citizens the right to freedom of speech and expression. It is a composite right because it has various meanings. This implies that all citizens have the right to express their views and opinions freely. This includes not only words of mouth, but also a speech by way of writings, pictures, movies, banners, etc. The right to speech also includes the right not to speak. The Supreme Court of India has held that participation in sports is an expression of oneself and hence is a form of freedom of speech. In 2004, the SC held that hosting the national flag is also a form of this freedom. ओके, तो जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये सिर्फ जो है इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वर्ड्स ऑफ माउथ। ये हम हमारे जो ओपिनियन है, हमारे जो व्यूज है, हम बाय राइटिंग, बाय पिक्चर्स, बाय मूवीज, बाय बैनर ऑल्सो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन इसको सपोर्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Freedom of the press is an interpreted freedom under this article. This right also includes the right to access information because this right is meaningless when others are prevented from knowing or listening. It is according to this interpretation that the right to information is a fundamental right. राइट टू इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं होगा, तो अगर कोई ओपिनियन शेयर कर भी रहा है, तो अगर दूसरे के पास इंफॉर्मेशन लेने का ही अधिकार नहीं होगा, तो वो आप ओपिनियन जो देने वाला है उसके उसको मतलब ही क्या रह जाएगा। ओके, तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हमारा, अनटिल एंड अनलेस जब तक राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो हम सबके पास ये भी राइट है कि वी कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन। The SC, Supreme Court has also ruled that freedom of speech is an inalienable right adjunct to the right to life. Article 21 जिसको support करता है right to life. These two rights are not separate but related. Restrictions on the freedom of speech of any citizen may be placed as much by an action of the state as by its inaction. This means that the failure of the state to guarantee this freedom to all classes of citizens will be a violation of their fundamental rights. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। आपने कभी हमें बोलने की आजादी है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी के घर के बाहर जाकर कुछ भी जाकर बोल दो, ये फिर कह दो कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, तो इट इज दिस, ये जो राइट है इट इज नॉट एब्सोल्यूट। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द रीजंस फॉर सच रेस्ट्रिक्शंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, sovereignty and integrity of the country, friendly relations with foreign countries, public order, decency of morality, incitement of offense, defamation, contempt of court. The Constitution provides people with the freedom of expression without fear of reprisal, but it must be used with caution and responsibility. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि सिक्योरिटी पर्पज, आपकी कंट्री के जो फॉरेन रिलेशन है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ जाए कि आप कुछ भी जा करके बोल दो या कुछ भी चीज अपने प्रेस में कुछ भी छाप लो, अखबार में कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं। These restrictions were imposed by the First Amendment of the Constitution in 1951. This amendment was necessary due to the Ramesh Thapar versus State of Madras 1951 case. In this case, the Crossroads Journal was printed and published in Bombay. Its entry in Madras was challenged in Madras High Court.
ये जो हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए, तो ये इसके लिए भी अमेंडमेंट हुआ कि भाई ये जो केस हुआ था रमेश थापर के, इसमें भी क्या हुआ था, ये जो प्रिंट जर्नल है, क्रॉसरोड जर्नल एक न्यूज़पेपर था, उसमें उन्होंने कुछ जो है मतलब हम कह सकते हैं कि जो सही चीज नहीं थी उसको प्रिंट कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो इस वजह से जो है ये जो रेस्ट्रिक्शन हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर ये लागू किए गए। फिर आता है हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली। The state guarantees every person the freedom to assemble peacefully without arms. However, as above, reasonable restrictions can be imposed in the interest of sovereignty and integrity of the country and public order. भाई आप कहीं पे भी इकट्ठे होने की आपको फ्रीडम है विदाउट आर्म्स, पर इस पे भी आपके रेस्ट्रिक्शन है, उन चीजों को सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे भी इकट्ठे बहुत लोग इकट्ठे होकर कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं, आपको फ्रीडम है, बट उसको आप एक दिस राइट इज ऑल्सो नॉट एक्चुअल। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन। Again, the state can impose restrictions in the interest of the integrity, security, and sovereignty of the country, friendly relations with foreign nations for public order with respect to defamation, incitement to offense, or contempt of court. This freedom gives workers the right to form trade union, which is thus a fundamental right. The Police Forces Act 1966 prohibits police personnel from forming trade union. The Constitution also allows the Parliament to pass a law restricting the right to form political association to members of the armed forces, intelligence bureaus, persons employed with telecommunication system. आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, बट उसके भी आपके कुछ राइट्स आपको दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको कहीं पे भी आप थ्रू आउट योर कंट्री आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, इसकी भी आपको फ्रीडम है। A citizen of India can move freely throughout the territory of India, but this right can also be restricted on the grounds of security, public order, or for protecting the interest of the scheduled tribes. आप मूव कर सकते हो, पर उस पर भी आपकी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। आप ऐसा नहीं कि अपनी लिमिट को क्रॉस कर दो, अपने राइट का मिस यूज कर दो। ओके। देन फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप कहीं पे भी रह सकते हो। Citizens of India have the right to reside in any part of the country, although restrictions can be imposed on the grounds of security, public order, or for protecting the interests of the scheduled tribe. अगेन यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है, आप रह सकते हो अपने इंडिया में कहीं पे भी, आप किसी भी जगह पर, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। ओके, इसका भी आपको राइट है कि आपकी आप, बट उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आपको, जैसे आप कह दो कि हमने तो, हम आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, बट हमें तो जो है, हमें जाकर के फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ाना है हमको जाकर के, तो आपको कोई भी जॉब करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, तो एक सर्टेन लेवल को क्वालिफिकेशन है, वो आपका क्राइटेरिया आपका क्लियर होना चाहिए, देन आफ्टर यू कैन डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। So all citizens have the right to carry on any trade or profession or occupation, provided the trade or occupation is not illegal or immoral. Also, the law does not prevent the state from making laws related to technical or professional qualifications required for practicing the occupation or trade. तो ये स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ा, हमारा पूरा जो है दैट इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम, जिसमें हमने क्या क्या, मतलब फ्रीडम हमने क्या क्या देखी कि हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कहीं पे भी रहने की आज़ादी है, हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, हम कोई भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हमें इकट्ठे होने की आज़ादी है, बट आपके देश की सिक्योरिटी पर्पज को लेकर के, उसके फॉरेन रिलेशंस को लेकर के कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज किए गए हैं, दैट उसकी लिमिट के अंदर रह करके वी कैन यूज दिस राइट। ओके, आई होप it is very much clear to all of you. So thank you everyone.